Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. At the stock markets falling for the seventh straight session, Sensex loses 188 points, Nifty sheds 41 points. Rupee gains 8 paisa against the US dollar. Country's current account deficit widens to $23.9 billion or 2.8% of GDP in April to June quarter. And Finance Minister Nirmala Sitharaman says startups must play key role in value addition of millets and exports. घरेलू शेयर बाजार में लगातार 7वें सत्र में हुई गिरावट। सेंसेक्स 188 अंक लौटका, निफ्टी 41 अंक नीचे आया, लेकिन $1 की तुलना में रुपया हुआ 8 पैसे मजबूत। देश के चालू खाते का घाटा अप्रैल से जून तिमाही में बढ़कर जीडीपी के 2.8% यानी 23 अरब 90 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा। और वित्त मंत्री सीतारामन ने जौ और बाजरा जैसे मोटे अनाजों के गुण संवर्धन और निर्यात में बढ़ोतरी के लिए स्टार्टअप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। आइए हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आमंत्रित करें आज के हमारे ऑनलाइन विशेषज्ञ राजीव नागपाल जी को, जो रिसर्च हेड etmarkets.com के हैं। राजीव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद मनोज। और अब घरेलू शेयर बाजार, जहां लगातार 7वें सत्र में आज गिरावट हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 188 अंक यानी 0.3% घटकर 56,410 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक यानी 0.2% कम होकर 16,818 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां निवेशकों ने छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली की है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.3% लाभ के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की वृद्धि हुई। At the stock markets falling for the seventh straight day, the Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 188 points or 0.3% to end at 56,410. The Nifty at the National Stock Exchange shed 41 points or 0.2% to close at 16,818. But in the broader market on the BSE, the mid-cap index inched up 0.3% and the small-cap index rose 0.6%. Sectorally on the BSE, the utilities index was the leading loser, declining 1.4%. The power index dropped 1.3%, IT index lost 0.6%, consumer discretionary index slipped 0.5%, and the BankX fell 0.4%, and the auto and the tech indices shed 0.3% each. Among advancing indices, the metal index climbed 1.5%, healthcare added 1.4%, FMCG index rose 1%, and the realty index gained 0.4%. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 8 पैसे मजबूत हुआ, 81 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ। राजीव जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार हालांकि लगातार 7वें सत्र में नीचे आया है, लेकिन कुल मिलाकर यदि हम रुख देखें तो बहुत बड़ी बिकवाली नहीं दिख रही। धारणा क्या लग रही बाजार की? देखिए मनोज जी, जैसा आपने कहा ना कि बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है। अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो शायद 7वां दिन जरूर है कि बाजार को नीचे होने का, बट अगर आप कंपेयर करेंगे टू ओवरऑल करेक्शन इन ग्लोबल मार्केट, करेंसी मार्केट और मार्केट ब्रेथ को देखेंगे तो लगता है कि जो करेक्टिव फेस है वो बहुत सारी ग्लोबल मार्केट्स को चोट लगी है। तो थोड़ा सा वी आर फार बेटर प्लेस एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। सो टू मी शायद ये एक फेज चलेगा थोड़े दिनों, बट उसके बाद देन वी आर लाइकली टू सी हायर प्रोबेबिलिटी दैट वी विल सी अ रिजम्पशन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट इन द इंडियन मार्केट्स और आउट परफॉर्मेंस शायद दोबारा शुरू हो जाए, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप स्पेस में उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है।
Rajiv, the Sensex, like we just said, that it's a 7th straight session when the markets have fallen, and most of it is because of global cues. But do you think that somewhere, today, one of the reasons could be the MPC announcements, decisions that are, going to come up tomorrow? The RBI MPC decision. See, the fact is that the probability that we are going to see any change is very high, but the fact is today's volatility was also because of the part that it was expiry of, September series contract in the derivative market. So, because of which we saw the volatility. But yes, ahead of an event, market players tend to keep their position low, due to which we saw this, we will not see a very long rollovers taking place. So that is one reason, yes, which led to some kind of a subdued impact, and you can say that, people are traders were wary of taking their longs at this point of time. You mentioned, of course, that the RBI MPC is the fact that, they are going to be announcing a rate hike is more or less a foregone conclusion. But more to the point, people would be looking at the markets, the analysts, the experts would be also looking towards Governor Shaktikanta Das about the commentary, especially to do with, the GDP growth and the inflation, projections. What is your estimation? What is your expectation? I think inflation has been controlled pretty well. I mean, if you look at the globe, while the best of the largest Federal Reserve was behind the curve, we were not. But I think now with commodity pricing cooling, there's a cool off in both agro commodity prices and metal prices. I think inflation should not be a very strong worry. And of course, as a governor, Mr. Das will be cautioning about it. But I don't think so that particular thing is going to be of a major concern at this point of time. But coming to the market, I think once it is done and dusted, the market will move beyond, let's say, after tomorrow, then on Monday it will start again thinking of the forthcoming earnings season now. Because as we enter October, we're going to start seeing earnings for the second quarter, where if you look at it, the first part of this quarter was where the commodity prices are very high, but in last part of last 45 days, the commodity prices have cooled down. So there is going to be a mix. Which companies have been able to maintain the market share? Which companies have been able to kind of, take a hit on their margins? All those things. So it's the earnings season, which probably tomorrow after 2:30 or 3, that is what the market is going to focus on. जी राजीव जी, आपने कहा कि दुनिया के कई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत शेयर बाजार के मोर्चे पर बेहतर रहा है। वैसे भी मनोज जी, नॉट ओनली ऑन द स्टॉक मार्केट तो एक बहुत छोटा सा वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग इट, बट इफ यू लुक एट इट अदरवाइज ऑल्सो जो बाकी जिस तरीके से हमने हमारे सिस्टम जो मैनेज हुआ है, जिस तरीके से करा गया, इट्स फार बेटर ऑफ देन आपको मैं जिस तरीके से रुपी में ग्लोबल करेंसीज में फॉल आई है, सब फॉल हुआ है, एंड देयर हैज टू बी अ डिक्लाइन। बट उतना कोई आपने पैनिक नहीं देखा है आपने कि भाई बहुत बड़ा आपने पैनिक देखा हो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ फॉल इन रुपी, जैसा कि, और ना ही हमारे रिजर्व की सिचुएशन हुआ जो 2013 में थी। सो वी हैव आवर सिस्टम्स विथ सम ऑफ दी सिस्टमिक थिंग्स विच हैव हैपेंड इन लास्ट 5-6 years, जो उन्होंने रेजिलियंस क्रिएट करी है, उसका इम्पैक्ट इस टाइम हमने देखा है कि भाई ग्लोबल इश्यूज हुए, हमको भी इशू हुआ, ऐसा नहीं है, बट वी आर फार बेटर प्लेस्ड ऑफ। और कंपैरिजन हमेशा रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक Ji, Rajiv, you just mentioned the reserves, forex reserves, and the rupee. The rupee is in a free fall, so to speak. It is going down by every day. Today, of course, we saw a little bit of it, strengthened against the US dollar. But the fact of the matter is that RBI has intervened to curb volatility in the rupee at various points. But it has impacted our forex reserves as well. The reserves have fallen down. What kind of challenges are there before the RBI? See, I'll tell you what. See, when if there is a small decline, we tend to use the word free fall. First of all, we should understand that a fall, why the fall is happening. The fall is happening, is it because of our own internal reason or there's a global reason? Yes. Now, the strengthening of US dollar is a global thing. If you look at what has happened to Japanese yen, whether it's euro, whether it's British sterling, or even the yuan. So
all those things have fallen. And back to that, as a country, as a currency, it was expected that we would be in far bigger trouble as compared to them. We are not. To me, and there is a certain amount of a natural depreciation which has to happen. We can't make our export absolutely uncompetitive, by keeping our currency strong. So to me, this fall which is being, headlines make look at as if heavens have fallen. I don't think that is the case. Of course, the cost of hedging should be gradual. Some people who are not hedged are going to cry foul and all those things are happening. But to me, the way the things have happened, they're perfectly normal. And like you said, reserve fees, these kind of movement and in and out of the reserve, it's a very much part of it. yes. I mean, if you want to look at the, let's say, look at the kind of decline which we have seen, look at the fact that $52 billion worth, billions of worth of dollar stocks were sold by FIs last year. And what happened to rupee? Nothing. Imagine this happening in 2012, 2013. The market would have been down by 50%. The rupee would have fallen much sharply. So everything has to be taken into relative comparison. Yes, you, of course, like you said, everything has to be put into perspective. And given the fact, even though the dollar is strengthening, Indian rupee is still by far, performing much better than many other major currencies. Yes, it's a basket of currency. And also, to be very honest, I don't think, till the time it's gradual, I think even some more weakness is not, we should not bother about it. Yes. We have IT exports. We should remember that fact is that IT export, of course, if the oil prices start to rise once again, then there would be an issue. But otherwise, I don't think so. There is any need of a knee-jerk panic or this narrative which goes on. Oh, rupee गिर गया. I don't think that is the right way to look at things. That is the narrative which media gives. Right. राजीव जी, आम श्रोताओं के लिए जो हमारे कहने के छोटे निवेशक हैं, उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे वर्तमान माहौल को देखते हुए शेयर बाजार के? शेयर बाजार में दो चीज. पहला, कि शेयर बाजार में आप शेयर मत खरीदने जाओ, आप बिजनेस के भागीदार बनो. जी. तो व्हेन यू बाय अ स्टॉक, यू आर बाइंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस. तो फोकस ऑन बिजनेस रादर देन स्टॉक प्राइस. और अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बन के जाओ, वेंचर कैपिटलिस्ट बन के मत जाओ. मैं 10 रुपए का शेयर लूं तो 30 रुपए हो जाए, वो जो प्री कंसीव नोशन के साथ जाते हैं ना, कि मुझे कोई छोटा स्टॉक बताओ जो 2 साल में 3 गुना हो जाए, वो ऐसा हो जाए, तो वो सब के बिना जाइए. और अगर आपको नहीं पता तो बेस्ट थिंग इज टू स्टिक विद म्यूचुअल फंड, स्टे विद SIP. डोंट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल अराउंड यू आर सेइंग एंड समबडी टेलिंग योर स्टोरी. मैंने इतने पैसे कमाए, इतना कुछ करा, मैंने ऑप्शन में कमाया. Stay away from these option trading, futures trading, which your friendly broker and friendly apps keep on telling you and pushing you to do it. That's the worst thing you can do with your money. If you are an investor, stick with investing. Good companies, and अगर नहीं पता, everybody cannot have that skill set. Please stick with mutual fund and stick with your SIPs. And which are the sectors which you think are going to be, performing well in the coming days and the months? I don't know about days, but to me, coming months actually should not be days. I would say let's talk about decades. I think the auto is one, where the chemicals, where we are seeing a major shift in the global supply chain. That is where things are going to change. IT of course continues, but it also depends on the valuation at which you are buying. See, if you buy a good business, even at a slightly bad valuation, time will take care of it. Somebody bought Infosys at the peak of 2000.com boom and got stuck with it. He was able to recover his money, by another 5 years, and he made super return later on. He got very good return. Even you made a mistake if you bought an Infosys at the peak of the .com bull run. But if you bought a stock like a DSQ Software, a global tele system, nobody would. When I'm saying this on this, किसने तो सुना भी नहीं रहेगा ये नाम कौन सी कंपनी है. But let me tell you, those were the stocks used to quote and heavily traded, heavily publicized in as if they are going to be the next big companies of the future and all, next Infosys of the world. So avoid all that this thing which comes on social media. That is a bigger poison which is there now. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला असर दिखा है. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1% लाभ के साथ बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की वृद्धि हुई. उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली बढ़त में रहा.
बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% नीचे आ गया। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.5% की गिरावट हुई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन में लगातार तीसरे महीने सितंबर में फैक्ट्री उत्पादन में गिरावट देखने की आशंका व्यक्त की जा रही है। रॉयटर के एक सर्वेक्षण में ये जानकारी देते हुए आज कहा गया कि बड़े शहरों में कोविड के कड़े प्रतिबंधों से निर्यात घटने की आशंका है। इससे नए सौदे और कारोबार धारणा पर भी प्रतिकूल रूप से असर पड़ा है। विभागीय परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगस्त के 49.4 की तुलना में हालांकि सितंबर महीने में थोड़ा सा बढ़कर 49.6 पर पहुंचने का अनुमान राइटर ने अपने सर्वेक्षण में व्यक्त किया है। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां अंतर्देशीय कारोबार में नरमी देखी जा रही थी। जर्मनी का डैक्स बिकवाली के दबाव में 1.4% नीचे चल रहा था। लंदन के फुटसी 100 में 1.9% की गिरावट थी। फ्रांस का कैक 40 भी 1.4% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the U.S. markets, on Wall Street, key indices ended sharply higher yesterday following its recent sell-off, helped by falling Treasury yields. While Apple shares dropped on concerns about demand for iPhones, interest rate-sensitive mega caps, Microsoft, Amazon and Meta platforms rallied as the yield on 10-year Treasury notes fell over 0.26 percentage point in its biggest one-day drop since 2009. So the Dow Jones Industrial Average climbed 549 points or 1.9% to end at 29,684. The S&P 500 added 72 points or 2% to close at 3,719, and the Nasdaq Composite jumped 2.1% to close at 11,052. Meanwhile, investors have been keenly listening to comments from Federal Reserve officials about the path of monetary policy, with Atlanta Fed President Raphael Bostic on Wednesday backing another 75 basis point interest rate hike in November. The Fed will likely get borrowing costs to where they need to be by early next year, Federal Reserve Bank of Chicago President Charles Evans said. Meanwhile, in England, the central bank said it would buy long-dated British bonds in a move aimed at restoring financial stability in markets, rocked globally by the fiscal policy of the new government in London. ये जो नई गतिविधियां हो रही हैं उनका क्या असर पड़ सकता है विश्व अर्थव्यवस्था पर, खास तौर पर जो इंग्लैंड में केंद्रीय बैंक का फैसला है कि वो ब्रिटिश बॉन्ड की लंबी अवधि वाली खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं? देखिए मनोज जी, एक पर्टिकुलर बैंक क्या करेगा, कैसे करेगा, यूज के लिए ठीक है, बट आई टेल यू पास्ट एक्सपीरियंस में अगर आपको 2012 के आसपास याद दिलाऊं, जब ये यूरो के ऊपर क्या हो रहा है, जब ये स्ट्रेस टेस्ट होते थे, तो एक इंडिविजुअल बैंक के रिएक्शन का बहुत लिमिटेड सा इम्पैक्ट होता है ऑन दिस थिंग. नाउ यूके में देयर आर अदर सर्टेन थिंग्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जो बिजनेस कट्स और जो एक पॉलिसी डिसीजन वहां पे सरकार ले रही है. तो I don't think so that I am competent enough to judge कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका क्या impact होगा. But broadly, history tells कि each central bank try to think, or each central banker think that he is the best of the best economist on the planet. But unfortunately, the fact is that over a period of time, everyone has been proven wrong. And this time the US Fed has been proven wrong. So, इन सब चीजों का मार्केट में शॉर्ट टर्म रिएक्शन हो सकता है, बट ओवरऑल इकोनॉमी मतलब मे बी 4 दिन 5 दिन के बाद फाइनली अगेन द थिंग विल गो बैक ऑन टू द सेम, फॉलोइंग द सेम थिंग व्हिच इज द अर्निंग्स एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज फॉर द मार्केट इज कंसर्न. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कई कंट्रीज के लिए ऑन एन एवरेज जिनके लिए बढ़ेगी उनको तकलीफ होगी, बट थैंक्स टू some of the things which have happened in the past, इंडिया में I don't think so that's happening. होने की probability है. The cost of capital, I don't think कोई किसी भी कॉर्पोरेट में या किसी ने ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया हो कि यहाँ कर फॉरेन करेंसी हेजिंग प्रीमियम ने इंडिकेट करा हो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सस्टेन बेसिस पे बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में. I don't think so, but of course कमेंट्री जो अक्टूबर में आएगी that would be a much bigger thing to see. जी, आगे बढ़ते हैं.
The country's current account deficit widened to $23.9 billion or 2.8% of the gross domestic product GDP in the April to June quarter, the Reserve Bank of India RBI said today. The deficit widened from $13.4 billion or 1.5% of the GDP reported in January to March 2022. The country had reported a current account surplus of $6.6 billion or 0.9% of GDP in the same quarter last year. Underlying the current account deficit in April to June period was the widening of the merchandise trade deficit to $68.6 billion from $54.5 billion in January to March quarter, and an increase in net outgo of investment income payments, the RBI said. Rajiv, the CAD or the current account deficit has widened to about 2.8% of the GDP. What are the implications for Indian economy? Sorry, can you please repeat the question? I lost the connection for 10 seconds. Okay, so the country's current account deficit, which is CAD, has widened to $23.9 billion or 2.8% of the GDP for the April to June quarter, as per the RBI said today. So what are the implications for the Indian economy? See, this CAD was supposed to, to be honestly, this was given the fact that oil prices have moved up. It is very much on the expected line. Now that there's cooling off, I don't think so it's going to be very... See, short term, these kind of movements do happen. And as far as the impact on the economy is concerned, it should not happen in jerks that we see this kind of widening. But this number which you're talking about was very much on the expected line. That is why we didn't see any major reaction from in any of the markets, whether it's bond, currency, or even in the equity market. So I don't think so. It's a short-term impact. Maybe a day or two the prices will adjust. But on economy, unless this continues for, next 2, 3, 4 quarters, we kind of see it. But which, in my opinion, probably cannot happen, because this readjustment of the dollar trade, which is happening across the world, is not going to continue forever. This is going to last maybe a quarter, much before that rather. राजीव जी, यहाँ पर हम आम श्रोताओं के लिए समझना चाहेंगे कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते का घाटा क्या होता है, और ये जो आंकड़े हैं उनका क्या प्रभाव आम लोगों की जुबान में वो समझें इसे। इन आंकड़ों से प्रसन्न हो या दुखी हो या सामान्य सी घटना लें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये उम्मीद जैसी थी उसी लाइन पे चल रही। मैं अगर इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को समझाने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। छोटा मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा वो एग्जांपल देता हूँ। आपने 100 रुपए का आपने सामान बेचा, आपका खर्चा है, और आपने 110 रुपए का इम्पोर्ट जो डिफरेंस है वो आपका जितना डेफिसिट होता है। 100 रुपए की कमाई थी, एक्सपोर्ट करा, 120 का मान लिया, तो 20 रुपए जेब से गए। सो द डिफरेंस दैट इज देयर इन द कॉमन मैन्स टर्म, But as far as these macroeconomic things are concerned, honestly speaking, most of the things are largely academic in nature. In real life term, अगर आप देखेंगे तो ये नंबर तो मुझे कई बार आधी बार तो समझ नहीं आता कि जिस तरीके से कैलकुलेट होते हैं रिलायबल है भी या नहीं। जैसे कि आप WPI वगैरह नंबर देखते हैं, अगर उसमें ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिनके अंदर अगर वो आप उस इंडेक्स से हटा देंगे तो आपको एक अलग ही पिक्चर दिखेगी। जी, आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू स्प्रेड कि बहुत बड़ा हो गया। ये पैनिक स्प्रेडिंग का कोई फायदा नहीं रहता है ऐसे टाइम पे जब नंबर आते हैं। जी, आइए आगे बढ़ें। भारत कृषि और खाद्य प्रणाली की चुनौतियों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडोनेशिया के बाली में G20 बैठक के विभिन्न सत्रों में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। श्री तोमर ने कहा कि देश में किसानों को वर्तमान और भविष्य की कठिनाइयों से निपटने के लिए बेहतर बीज, उर्वरक, तकनीक तथा बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को समूहों में रखा गया है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और विश्व का सबसे बड़ा फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया गया है। Moving on, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said imparting skills to the youth through the Atal Tinkering Labs has empowered the youth. She was speaking at the 105th Annual General Meeting of Federation of Karnataka Chamber of Commerce and Industries in Bengaluru today.
Emphasizing on Anusandhan or research and innovation, the finance minister said that startups must play a key role in value addition of millets and exports. She asked Karnataka to showcase its opportunities to the investors during the upcoming G20 summit to be held across the country. She also asked the state to take advantage of the trade policy under formulation. She informed that negotiations are on with the UK, Canada and the European Union for a free trade agreement, and India has free trade agreements with Australia and the UAE. Moving on to commodities, erasing earlier losses, global crude oil prices firmed up today on indications that the OPEC Plus might cut output though a stronger dollar and weak economic outlook kept a lid on gains. So the Brent crude futures rose 52 cents to trade at $89.84 a barrel. U.S. crude futures gained 52 cents to $82.67 a barrel. Rajiv, we have seen that thankfully the oil prices, crude prices are have fallen below $90. But like we just said, there are indications. There is going to be a meeting of the OPEC Plus on October 5th, and there are indications have indicated, the grouping has indicated that it might cut down on the production. Will we continue to see the volatility and the impact on the oil prices? The probability of volatility is very high. See, but on the thing which I have to figure out is that, a couple of months back we used to talk about oil prices moving up because of the problem coming out of Russia and Ukraine. Now that narrative is no longer there. But the fact is OPEC Plus also knows that beyond a point, if the price keeps on increasing, not only there will be a political pressure to do it, but the fact is that the demand itself gets get impacted. And especially given the fact that inflation in US is high, so they cannot move beyond a point. But some of those decisions which they do on cutting of oil supply, cutting of the production and all, are more political in nature rather than economic in nature. So yes, in my expectation, the volatility is going to be there. But if you're going to see another fresh round of oil crossing the recent highs, I see the probability of that happening to be extremely less at this point of time. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आज अंतर्दिवसीय कारोबार में 170 रुपए घटकर 50,062 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 268 रुपए घटकर 56,037 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। Moving on, the government today deferred a proposal to make 6 airbags mandatory in cars by 1 year to 1st of October 2023. In a series of tweets, Road, Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said, the decision has been taken considering the global supply chain constraints being faced by the auto industry and its impact on the macroeconomic scenario. He added that the safety of all passengers traveling in motor vehicles, irrespective of their cost and variance, is the foremost priority. राजीव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी हम लेना चाहेंगे। यहाँ के गाड़ियों में जो 6 कह लें कि एयरबैग लगाने का सिलसिला है, उसको अमल में लाने में क्या प्रभाव पड़ सकता है ऑटो सेक्टर पर? बहुत संक्षेप में। बहुत थोड़ा सा पड़ेगा, बहुत थोड़े टाइम के लिए। आई थिंक दिस वाज मतलब स्टैंडर्डाइज रिक्वायरमेंट बहुत जगह पहले हो चुकी है, बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, एक और बात बता दूं, कार जो कंपनी है एज यूजुअल बोलेंगे यार ये हो गया वो हो गया, कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट इन रियल टर्म नथिंग मच इज गोइंग टू हैपन। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock markets, falling for the 7th straight session, Sensex loses 188 points. Nifty sheds 41 points. But rupee gains 8 paisa against the dollar. Country's current account deficit widens to $23.9 billion or 2.8% of GDP in the April to June quarter. And Finance Minister Nirmala Sitharaman says startups must play a key role in value addition of millets and exports. घरेलू शेयर बाजार में लगातार 7वें सत्र में गिरावट। सेंसेक्स 188 अंक, निफ्टी 41 अंक नीचे आया। $1 की तुलना में रुपया 8 पैसे मजबूत हुआ और देश का चालू खाते का घाटा अप्रैल से जून तिमाही में बढ़ा 23 अरब 90 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। And with that, we end this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters and later in the day at 6:30 p.m. with our regular edition of Market Mantra. Do join us then. Till then, this is Anubha Rohatgi and Manoj Pathak with the entire team of Market Mantra saying bye-bye. Namaskar.
मौज मस्त